Dear students, very good afternoon to everybody, and I hope you all are fine. You are doing your studies very nicely, effectively, and sincerely. Okay. Today we are going to discuss about a new concept, and where there will be n number of objects, and all the number of objects are not different, not distinct. Earlier क्या हुआ था, जितना नंबर लिए थे सब डिस्टिंक्ट था, और डिस्टिंक्ट नंबर को अरेंजमेंट करना था हमें, अर्लियर कंसेप्ट था. अभी क्या है, जो कंसेप्ट हम वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड और गोइंग टू नो अबाउट द कंसेप्ट. ये कंसेप्ट क्या है, वहाँ में सपोज n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहेगा, लेकिन उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होगा, सेम रहेगा. इस टाइप की अगर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो ये सारी ऑब्जेक्ट को कैसे हम अरेंजमेंट करेंगे, दैट इज़ आवर इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ टुडेज क्लास. ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू state, and this statement is on your screen. The statement is number of permutations of n objects, where p1 objects are of one kind, p2 are of second kind, and pk are of kth kind, and rest, if any, are all different, means distinct. Then what is the permutation? Permutation is n factorial divided by p1 factorial into p2 factorial dot 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 pk factorial. This is the particular concept. So to understand this particular concept, we have to give an example first, and from this example we have to try to understand this particular that is results. Okay, we will generalize it. Okay, पहले एक particular example ले ले, एक small example ले ले, एक छोटा सा example ले ले, लेके ये concept को समझना पहले ज़रूरी है. And after that what we will do, अब हम क्या करेंगे, ये generalize concept को समझ लेंगे. ठीक है. सो ये क्या है, दिस इज दैट देयर आर n ऑब्जेक्ट्स. अर्लियर क्या हुआ था, देयर आर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. इन हाउ मेनी वेज n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज अमॉन्ग देमसेल्व्स. क्या था, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स था, और उसको खुद अपने आप से अरेंजमेंट करने का जो रूल था, ये क्या था, npn, and which is equal to what, factorial n, which is equal to what, factorial n. This is our answer. If all the numbers, all the objects are what, different, all the objects are what, different. जैसे suppose that 1 2 3, there are 3 digits. In how many ways using these 3 digits you can form 3 digit number. ये 3 digit यूज़ करके आप कितना 3 digits का नंबर बना सकते हो. That means 3 digit के लिए कितना प्लेस होगा, 3 प्लेस होगा. ओके, 3 प्लेस होगा. You have a 3 digits, and this 3 first is filled up by 3, second is 2, then 1, then ultimately what, total number of 3 digit number is what, 6, and this can be written as what, factorial 3. Okay, there are 3 digits, there are 3 place, and this 3 place can be filled up by 3 digits, means the arrangement of 1 2 3, the arrangement of the digits 1 to 3 among themselves is equal to what, factorial 3. Okay, this is the idea. Now among these few objects are of same type. जैसे अगर ऐसा हो जाए 1 2 2, you see all are not distinct. पहले क्या था, 1 था, 2 था, 3 था, all are different. Now 1 2 2, how many ways you can form a number of there is a 3 digit number using this digits 1 2 2 1 2 2. So first we check manually, and then we generalize. Okay, you see there are 1 digit 1 2 3. इसमें नंबर क्या क्या होती है, आप पहले थोड़ा सा डिस्कस कर ले, and then you get an idea. Okay, first number is 1 2 3, then 1 3 2, then what 2 1 3, then 2 3 1, then 3 1 2, then 3 2 1. These are the numbers, 6 numbers. These are the numbers. Now if I replace 3 by 2, then numbers are what, 1 2 2. In this case all are distinct, in this case all are not distinct, all are not distinct. इसमें कुछ repetition भी है. Okay, there is a number 2 which is there are 2 2s. Okay, how many 2s, there are 2s are what, 2 numbers. Okay, now in this case if you replace 3 by 2, then what will be the numbers क्या हो रहा है, 1 2 2,
ये क्या हो रहा है 1 2 2, ये क्या हो रहा है 2 1 2, आई एम रिप्लेसिंग 3 by 2, okay, 2 2 1, this number is what 3, I'm sorry 3 now 2 1 2, and finally this is what 2 2 1, okay. So ultimately using this three digit numbers will be like that. Among this number you see these two numbers are same, this one and this one are same, this one and this one are what same, okay, understood. Ultimately these two numbers are same, this is one number, these two numbers are same, this is one number, these two numbers are same, this is one number. Ultimately 1 plus 1 is equal to what? We have how many numbers? 3 numbers. But earlier if all the digits are different, so how many numbers? 6 numbers, yes or no? And 6 is equal to what? Factorial 3, understood. And after that is one particular number is same, ये दो नंबर क्या है सेम है, I replacing 3 by what 2, that means all the numbers are not different, all the digits are not different, and finally we get how many numbers? 3 numbers. आपको कितना नंबर मिल रहा है? 3 नंबर मिल रहा है. अर्लियर कितना मिला था? 6 मिला था. तो इस this 3 equal to, you can write 3 equal to what? Factorial 3 divided by what 2, yes or no? Factorial 3 means what? 6. 6 by 2 equal to what? कितना हो रहा है? आपका रिजल्ट क्या हो रहा है? 3 मिल रहा है, राइट? मिल रहा है कि नहीं? So there are two numbers of same kind. There are two numbers of same kind. 2 is a number of same kind, okay? Same kind means what? ये क्या है? एक ही टाइप का है, ठीक है? एक ही टाइप का है. तो ये कितना नंबर से? 2 नंबर से, इसीलिए 2 से डिवाइड कर रहा हूँ. It will be better to understand if you write by factorial 2. Dividing by what? Factorial 2. Factorial 2 equal to what? Actually 2. So ultimately what we get? These numbers 1, 2, using these digits, how many numbers we can form? We can form factorial 3. 3 numbers से factorial 3 आएगा arrangement, and divided by what? Factorial 2, because there are 2 numbers which are of same type. Which are of what? Same type. Now if we generalize this again by another, suppose 1 2 2 3 3, suppose 4. How many numbers can be formed using these digits? How many numbers can be formed using the digits? Suppose 1 2 2 कितना था? 6 है. How many 6 digit numbers? How many 6 digit number can be formed using the digits? अगर ऐसा होता 1 2 3 4 5 6, there are 6 digits. Using these 6 digits, how many numbers can be formed? Using these 6 digits, number will be what? Factorial 6. Number will be what? Factorial 6. Why factorial 6? Because there are 6 digits. For this there are how many places? There are 6 places, and there are how many digits? 1 2 3 4 5 6. So this 6 digit can be placed in 6 place by how many ways? 6p6, which is equal to what? Factorial 6. Okay. So if all the digits are different, how many numbers will be created? Factorial 6 number. But here you see, no doubt there are 6 digits. Among these 6 digits, this is of first kind, okay, and this is of second kind, okay. Same type of numbers are there. This is of what? Second kind. So using these results, what will be your particular that concept I have developed? Factorial 3 by factorial 2. Initially क्या होना चाहिए? Factorial 3 होना चाहिए. Since there is a number 2 which is repeated how many times? 2 times, and therefore we divided by what? Factorial 2. And other number 1 which is not repeated, so it actually you can write factorial 1, and factorial 1 is equal to what? 1. So no need to write. Okay, understood. Now इसमें क्या है? all are distinct. तो क्या होगा? factorial 6 आंसर होगा. लेकिन इसमें सब डिस्टिंक्ट नहीं है. उसमें क्या है? there is a number 2 which is of first kind, same type. There is a number 3 repeated twice which is of second kind, and therefore your result will be what? 1 2 3 4 5 6 digit number क्या होगा? factorial 6 होगा. डिवाइडेड बाई फर्स्ट काइंड में कितना है? 2 है. सो यू राइट फैक्टोरियल 2 डिवाइड करो इनटू सेकंड काइंड में भी 2 है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करो. ठीक है, दिस इज द एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थ्योरम. ओके,
give another example, you will understand better. Suppose that suppose A, B, C, A, D, C, D, B, E, F. Okay, these are the letter. Okay, these are the what letter. How many letters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are how many letters? 10 letters. Using these 10 letters, okay, how many word you can form? How many word you can form? So इसमें क्या है? There are how many A's? A's are how many? 1, 2 type. How many B's are there? 2. How many D's are there? Suppose that D. This is what suppose D. Okay, there are 11 letters. Okay, how many D's are there? There are what? D's are how many? 3. Anything else? And I hope other are all C. How many C's are there? How many C's are there? There are 2 C's. Okay, so in this particular 11 letters, there are A's of 2. A's are how many type? 2 type. This is of first kind. B's are how many? 2. This is of second kind. D's are how many? 3. It is of third kind. And C's are how many? 2. This is of fourth kind. Okay, understood. So result actually, so अगर सब अलग अलग होता, all are different, then your result will be what? 11 factorial. ऐसा होगा 11 P11 हो जाएगा. आंसर इज वेरी सिंपल. बट इसमें क्या है, कुछ रिपीटेड है, कुछ लेटर क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट? A's are how many? 2. So divided by 2 factorial. B's are how many? 2. Divided by 2 factorial. Multiplication होगा. D's are how many? 3. So divided by 3 factorial. And C's are how many? 2 divided by 2 factorial. And बाकी क्या है? बाकी E and F are what? सिंगल है. That means distinct है, तो उसको लिखने का ज़रूरत नहीं. This is the total number of arrangement. That is, this is the number of letters, number of words can be formed using this particular letter. Okay, 11 letters. इस 11 लेटर से इतनी ही नंबर हम, इतनी ही वर्ड हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, अगर सब डिस्टिंक्ट होता, अलग अलग होता, सिंगल होता, तो क्या होता, हमें आंसर क्या मिलता? 11 फैक्टोरियल मिलता. ठीक है, वो समझना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ द वेरी राइट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड. उसमें उससे आपका क्या है, जो जनरलाइज जो थ्योरम है उसको समझने में क्या होगा, आसानी होगी. आपका थ्योरम क्या था? देयर आर n ऑब्जेक्ट्स. क्या था? n ऑब्जेक्ट्स. ये सुनो, n ऑब्जेक्ट्स, एंड अमॉन्ग देम देयर आर p1 numbers are of first kind, p1 object of first kind, then p2 object of second kind, then p3 and go on, so on, dot pk object of kth kind. Okay, ऐसा होगा. तो what is your result? Result is number of arrangement is what? Factorial and divided by p1 factorial, p2 factorial, dot pk factorial. Yes or no? This is the this particular इस एग्जाम्पल से आपको क्या मिल रहा है? फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल व्हाट 2. ठीक है, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल व्हाट 2. इसमें कितना नंबर था? 3 नंबर था. डिस्टिंक्ट होने से क्या हो रहा है? डायरेक्ट आपका फैक्टोरियल 3 आ रहा है. इसमें भी इतना 3 डिजिट्स है, और 3 डिजिट्स को अरेंजमेंट करना फैक्टोरियल 3 है. ये फॉर्मूला से आया है. एंड देयर इज ए this is p1 is what? This is p1 is equal to what? 2. 2 are how many? How many 2s are there? There are 2 2s. There are how many 2s? 2 numbers. Okay, that's why divided by what? Factorial 2. This is actually what? Your p1. And remaining p2 pk नहीं आ रहा है, because there is no any possibilities. There is no any possibilities. Okay. So जैसे अगर मैं कहूँ 1 1 2 3 3 4 4 4, उसमें कितना नंबर आप क्रिएट कर सकते हो? हाउ मेनी वेज? 1 2 3 4 5 6 7 8. हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी डन? तो अरेंजमेंट क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8. फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय 1 कितनी बार है? 2 है, ट्वाइस. ये p1 है.
then what into, there are 3, this is P2, okay, and this 4, this is what P3, it is what factorial, this is factorial 2, okay, factorial 2, and this is what factorial 3. समझ में आ रहा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट. 2 is what? Only single, which is distinct, which is what? Distinct. So this is your P1, this is your P2, this is your P3. जितना नंबर अगर ऐसा कुछ और नंबर मिले तो मल्टीप्लाई होते रहेंगे, ठीक है? We can multiply it. So hope you understand this particular concept. Please everybody go through this, understand it. From here you visualize it, your particular result. ये रिजल्ट को विजुलाइज कर सकते हो, वरना क्या होगा इसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है? आपको लोगों को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगी. इसीलिए क्या होगा, ये केस दिस पर्टिकुलर वाई इट इज़ गोइंग टू यूज़ बिकॉज ऑफ दिस इज़ द पर्टिकुलर एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड. हमें क्या हो जाता है, रिपीट होने से नंबर क्या हो जाता है, पहले क्या होता है 6, बाद में क्या हो जाता है कुछ नंबर क्या हो जाती है रिपीट होती है, तो रिपीट होकर नंबर कितना होता है 3, और उससे क्या रिलेशन बन जाती है, ये रिलेशन बनती है, ठीक है? वी गेट दिस पर्टिकुलर रिलेशन. ओके, सो दिस वे वी कैन डेवलप दिस पर्टिकुलर रिजल्ट्स. Okay, so please go through this. This is a very useful one, and using this we can solve many questions. Now we are going to solve first question. The question is on your screen. How many words with or without meaning can be made from the letter of the word Monday, assuming that no letter is repeated? If number 1, 4 letters are used at a time. Or next, number 2, all letters are used at a time. All letters are used, but first letter is a vowel. First letter is a vowel. Very nice question. तो इसमें इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है. फर्स्ट पार्ट क्या है, हमारे पास मंडे एक वर्ड है, इसमें कितना लेटर है, 6 लेटर है. उस 6 लेटर को पहले कैसे अरेंजमेंट करना है, वी हैव टू फाइंड find the number of words when 4 letter are used at a time. कोई भी 4 लेटर एक साथ यूज़ कर सकते हो, बाद में सब लेटर एक साथ यूज़ कर सकते हो. एंड थर्ड इज़ what all letter are used but first letter is a vowel. Okay, so see the question. So in the word Monday, you start the solution like that. In the word Monday, there are how many letters? There are 6 letters. Okay, understood? There are how many letters? 6 letters. So first question is that you have to find the number of words in which you take 4 letters at a time. This means you have a 6 letter, and among these 6 letters you are taking 4 at a time. That means you have to find 6p4. Okay, so the first question you can write like that. The number of words in which four letters taken at a time is 6p4. So 6p4, how we can calculate? You can calculate as NPR formula is equal to factorial 6 by factorial 2. Okay, factorial 6 minus 4 means what? Factorial 2. Factorial 6 means what? You can write 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into, that is, you can say factorial 2 divided by factorial 2, and this one cancel, and ultimately 30
360. That means if you take out of 6 letter 4 letter at a time, then your number of words will be created what? 6p4. Okay, 6p4, and if you calculate 6p4 is equal to what? 360. This is the first part of the question. Now second part of the question. If you take all the letters together, सब लेटर एक साथ ले ले, how many words can be formed? That means आपके पास मंडे एक वर्ड है, उस ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, ये 6 लेटर है, 6 लेटर को हम यूज़ करेंगे एक साथ, तो क्या होगा? हाउ मेनी वर्ड विल बी क्रिएटेड? दैट मीन्स 6 लेटर के लिए कितना प्लेस है? देयर आर व्हाट? 6 प्लेसेस होगा. ओके, so 6 letter can be arranged in 6 place, means what? 6p6. Okay, or you can say 6 letter can be arranged among themselves in 6p6 ways, or that is what is 6p6 is equal to what? Factorial 6. Okay, so this is your answer. So you can write 6 letters in which number of words, the number of words you write, number of words in which all the letters are used equal to 6p6, and which is equal to factorial 6, and you calculate it is what? Factorial 6 means what? This one. Okay, so 30 into 12, 360 into 2, 720. There are 720 words can be created if all the letters use at a time. All the letters use at a time. Okay, सब लेटर को अगर यूज़ करें, देयर विल बी डिफरेंट अरेंजमेंट. 6 प्लेस होगा, 6 प्लेस में डिफरेंट वे आपको उसको क्या कर सकते हो? प्लेस कर सकते हो. और प्लेस करने के बाद 6 लेटर को 6 प्लेस में अगर प्लेस करें तो ये आंसर 6p6 है, और which इक्वल टू फैक्टोरियल 6. You know npn equal to what? Factorial, and that formula I have applied here. Okay, this is the second question. Now we are going to discuss about third question. Okay, third part of the particular question. Third part में क्या है? थर्ड पार्ट में क्या था? All letter are used, but first letter is a vowel. Very very important. Okay, first letter is a vowel. जो भी हो, there are be what? All letter use होगा means 6 place होगा. Okay, we have how many place? We have a 6 place. Okay, and in 6 place you see first वर्ड जो बनता है, जो वर्ड बनेगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? बावल होना चाहिए. दैट मीन फर्स्ट प्लेस इज फिल अप बाय व्हाट? बावल. तो फर्स्ट प्लेस में बावल कितना है? हमें ओ है, ए है. ठीक है, 2 बावल है. दैट मीन्स व्हाट हैपन? दिस प्लेस इज फिल्ड अप बाय व्हाट? 2 वेज. ओके, एंड इन आवर हैंड देयर विल बी ए 5 प्लेस रिमेनिंग. कोई भी लेटर देने के बाद आप क्या कर सकते हो? लेटर को रिपीट नहीं कर सकते. ओके, यू कैन नॉट रिपीट द लेटर बिकॉज ऑल द लेटर आर डिस्टिंक्ट. रिपीट नहीं कर सकते, इसीलिए बाकी 5 में 5 लेटर दे सकते हो. 5 प्लेस है, कोई एक लेटर देने के बाद बावल क्या होगा? इधर ओ और ए कोई भी देंगे यहाँ में, और इसके बाद बाकी में बाकी लेटर देंगे. तो पर्टिकुलर बावल देने के बाद वी विल रिमेन व्हाट? 5 लेटर्स. वी विल रिमेन व्हाट? 5 लेटर्स. एंड यूजिंग दिस 5 लेटर्स, 5 place can be fill up by what? 5p5 ways. Okay, so ये fill up होने के बाद ये हो रहा है. ठीक है, after filling up this you are filling this. So by fundamental principle of counting, this into this is the required number of words. ये पर्टिकुलर एक इवेंट है और ये और एक इवेंट है. दोनों इवेंट क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. दोनों इवेंट क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, so your answer will be 2 into 5p5. Okay, so you can write it like that. Since
the letters are, ऐसा लिखे, number of letters, number of words starting with vowel. Starting with vowel is equal to I'm sorry, और थोड़ा सा explanation चाहिए. Okay, since the words are start with vowel, so first letter can be either O or A, that is first place can be filled up in two ways. Okay, remaining 5 place can be filled up by 5 letters in 5p5 ways. ये होगा, ठीक है. तो फास्ट जो भी वर्ड बनता है, ये वर्ड में पहला लेटर क्या होना चाहिए, बावल होना चाहिए. हमारे पास 2 बावल है, तो फर्स्ट प्लेस क्या होगा, 2 वेज में फिलअप होगा. रिमेनिंग 5 प्लेस हमारे पास रहेगा, वहाँ में हमारे पास रहेगा 5 लेटर्स. तो 5 लेटर्स से 5 प्लेस फिलअप करने का तरीका क्या है, 5p5 है. देयरफॉर नंबर of words equal to 2 into 5p5, that is 2 into factorial 5. This 2 into factorial 5 कितना होगा, 5 into 4 into 3 into 2. ओके, 1 तो मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत. 20 into 2, 40 into 3, 120 into 2, 240. So there will be 240 words can be created if the first letter is a vowel. Okay, first letter is a vowel. Okay, this is the particular answer of the question. Okay, the second question of the particular class: in how many of the distinct permutations of the letters in the Mississippi do the 4 I's not come together? Okay, there is a word Mississippi is given, and you are going to find all the distinct permutation such that I's do not come together. I's do not come together. So in the word Mississippi, okay, MISSI. Double PI. Okay, this is the word Mississippi. In the word Mississippi, there are how many words? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. There are 11 letters.
in which few letters are of same kind. Few letters are of what? Same kind. Okay. What are the same kind letters? Where S are 4 times, in which S are how many? 4 number. Okay. S are how many? 4 number. Then I are how many? 4 number. And then P are how many? 2 numbers. And I hope these are the given. S are 4 number, I are 4 number, P are 2 numbers. Okay. Now 11 letters can be arranged among themselves. 11 letters can be arranged among themselves means there are 11 letters, there will be 11 places, तो 11 letter can be arranged in 11 place. Normally क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, 11p11. ओके, तो मीन फैक्टोरियल 11 होना चाहिए. ठीक है, क्या होना चाहिए, फैक्टोरियल 11 होना चाहिए. बट इट विल नॉट बी फैक्टोरियल 11 बिकॉज in this particular word all the letters are not distinct. There are some word are of first kind, another some are second kind, another some are third kind. Okay, so using our previous conception whatever we have discussed, it will be what, factorial n by p1 factorial into p2 factorial dot dot dot. जो हमने particular रिजल्ट दिया था ये रिजल्ट यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इसमें n equal to what, 11. तो 11 factorial divided by factorial 4 into factorial 4 into factorial 2. So it's a big calculation, no need to require to all calculation, you write like that. Okay, no issue. So this is the number of arrangement. ये क्या है, एक arrangement है और इस अरेंजमेंट में इतनी सारी क्या होगा, लेटर क्रिएट होगा. ये सारी जो लेटर है, इस लेटर में कुछ लेटर क्या होगा, आई टुगेदर रहेगी, कुछ लेटर में आई टुगेदर नहीं होगा. दैट मीन्स टुगेदर प्लस नॉट टुगेदर, टुगेदर प्लस नॉट टुगेदर. आइज के बारे में बात कर रहा हूँ. नॉट टुगेदर इज इक्वल टू टोटल वर्ड्स. ये टोटल वर्ड्स क्या है, दिस इज द टोटल वर्ड्स. इस टोटल वर्ड में कुछ वर्ड होगा वहाँ में आई टुगेदर रहेगा, कुछ वर्ड रहेगा नॉट टुगेदर रहेगा. आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नॉट टुगेदर. ओके, यू आर टू फाइंड व्हाट, नॉट टुगेदर मीन्स व्हाट, नॉट टुगेदर मीन्स आप टोटल से टुगेदर माइनस कर दो. आप टोटल से क्या करो, टुगेदर. ये पर्टिकुलर थिंग्स इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, टोटल वर्ड्स माइनस टुगेदर. ओके, टुगेदर जो आई वाला जो वर्ड्स होगा, जो टुगेदर आई रहेगा, ये सारे वर्ड माइनस करने से नॉट टुगेदर आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो आपका काम है क्या, टोटल तो वर्ड आप निकाल दिया, आपने टुगेदर वाला निकालना है. नाउ यू आर टू फाइंड द परमुटेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स और अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स. ओके, ये वर्ड्स का अरेंजमेंट निकालना है, जहाँ क्या होती है, आई साथ रहेगी. साथ क्या रहेगी, जहाँ जहाँ आई जाएगा एक साथ जाएगा. देयर आर 4 आई. ऐसा होगा जैसे मैं एक वर्ड बना लूँ, MII, यस, मैं SP जो भी हो, SP SP SS ऐसा कुछ. ठीक है, ये एक वर्ड बन गया, विथ मीनिंग और विदाउट मीनिंगफुल, देयर इज़ नो क्वेश्चन फॉर अस. सो ये आई क्या है, टुगेदर है. ऐसा बहुत सारे वर्ड मिलेगी, ऐसा बहुत सारे वर्ड मिलेगी, वहाँ में क्या होगा, आई टुगेदर. पहले क्या था, आई था, आई इधर भी जा सकता, आई किसी भी प्लेस में क्या होगा, जहाँ भी जाएगा वहाँ में क्या होगा, आई क्या होगा, एक साथ जाएगा. ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. बंडल के साथ जाएगी, इट विल बी ए बंडल. ओके, जहाँ जाएंगे वो एक साथ है. सपोज it is in this place, maybe in last 4 place, maybe in middle 4 place, maybe in first 4 place. So in this way there will be many arrangement. Okay, टुगेदर वाला, ये टुगेदर वाला टोटल से माइनस करने से नॉट टुगेदर हमें मिल जाएगी. हमारा टारगेट है नॉट टुगेदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट, टुगेदर. नाउ इफ वी कंसीडर
if all the i's together as a single object, जहाँ जहाँ आई रहेगी एक साथ रहेगी, और आई को हम क्या कहेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे अगर ऐसा हो एम आई आई, सपोज एस पी एस एस पी एस, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आइस कितना है, 4 है। तो ये जो आई है, ये सारी आई को क्या करेंगे, एक सिंगल ऑब्जेक्ट लेंगे, सिंगल लेटर सपोज कर लेंगे। सपोज इट इज़ व्हाट ए, सपोज इट इज़ व्हाट ए। तो नया जो हमारा क्या होगा, लेटर क्या रहेगा, एम ए एस ए पी एस एस पी एस, ठीक है। कितना लेटर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अंडरस्टूड। हमें ओरिजिनली कितना था, हमें ओरिजिनली 11 था। 11 से 4 आइस को हमने सिंगल लेटर में कन्वर्ट किया, तो 4 को माइनस करो और जो सिंगल बनाया था उसको ऐड करो, ठीक है। इनिशियली कितना था, 11 था। वहाँ से 4 आइस विल टेक ए सिंगल ऑब्जेक्ट एंड व्हिच सिंगल ऑब्जेक्ट इज +1 एंड 4 आइस को सिंगल बना दिया। दैट मीन्स व्हाट, वी डिडक्ट 4, टोटल से 4 माइनस करके जो रिजल्ट आई उसके साथ 1 ऐड कर देंगे। 1 क्यों ऐड करेंगे, बिकॉज 4 बिकम्स व्हाट 1, टोटल से 4 माइनस के बाद में क्या होगा, सो दिस पर्टिकुलर रिजल्ट इज इक्वल टू व्हाट 8। सो हमें कितना लेटर रहेगी, if all the i's together as a single object, then total letters will be क्या होगा, 11 minus 4 plus 1 equal to 8, in which, काफ़ी लैंग्वेज लिखना पड़ता है, in which, इसमें क्या होगा, in which, ये जो 4 लेटर्स आई है, आई को तो सिंगल मान लिया हमने, इसके बावजूद भी, सिंगल मानने के बावजूद भी हमारे पास s कितना रहेगा, in which 4s और 2p's रहेगा हमारे पास, 2p's, ओके, 4s एंड 2p's रहेगा। अंडरस्टूड, कैपिटल P, ओके। सो ये जो नया लेटर बनेगा, आई विल टेकन, ऑल द आइज विल टेकन ए सिंगल लेटर, एक साथ मिला के उन लोगों क्या बनेंगे, सिंगल लेटर लिख लेंगे। एंड इन दिस सिंगल लेटर लिखने के बावजूद हमें कितना लेटर रहेगा, 8 लेटर होगा। और ये जो 8 लेटर होगा उसमें क्या होगा, 4s रहेगा और 2p रहेगा। सो 8 लेटर कैन बी अरेंज अमॉन्ग देमसेल्फ, क्या होती है 8p8, होता है कि नहीं। लेकिन इसमें 8p8 नहीं होगा, बिकॉज सम लेटर्स आर व्हाट, रिपीटेड, सम लेटर्स आर व्हाट, रिपीटेड। सो यू कैन राइट therefore number of arrangement in which all i's are together is equal to what, factorial 8, टोटल तो 8 लेटर से फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। ये जो पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ज़रूर आएगी, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, कोशिश करना। ये सारी चीज़ क्यों होता है समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये अरेंजमेंट क्या हो गया, टुगेदर वाला अरेंजमेंट कितना हो गया, फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल व्हाट 2, ओके। अभी क्या करेंगे आप, ये फैक्टोरियल 8, ये जो पहले रिजल्ट कितना था 11 होता, ये तो टोटल में क्या है, टुगेदर प्लस नॉन टुगेदर है, तो टोटल से ये माइनस करने से वो क्या होगा, नॉट टुगेदर हो जाएगी। देयरफॉर
permutation of or arrangement of or number of letters, कुछ भी लिखो, therefore number of letters, number of words, I am not sure letters, number of words in which eyes are not together. Eyes are not together is equal to 11 by factorial 4 into factorial 4 into factorial what 2, okay, minus इसमें 11 factorial 8 factorial divided by what 4 factorial into 2 factorial. तो आप इसमें थोड़ा सा कॉमन ले सकते हो या आप आंसर ऐसा लिख के रख दो, ठीक है, हो जाएगा. At the end of the class, these are the two homeworks I have given to you. I believe that you can solve these two questions. Little difficulties are there and you try your level best to solve these questions. If you cannot do this, cannot solve these two questions, in the next class I will discuss this particular two questions. I will give an analysis of this question, and if you do it, then it is very good and it will be well appreciated. Okay, so with this I conclude here. Thank you very much, all the best, and have a good day ahead. Thank you.